यू आर द हेड ऑफ HR डिपार्टमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इस साल सब कंपनीज के आगे, गवर्नमेंट वाला कोई है ही नहीं, सब कंपनी IT प्रोफेशनल, ABC लिमिटेड, एक दो है गवर्नमेंट। ओके, you are a head of HR department of an organization. One day, one of the workers died on the duty. His family was demanding compensation. However, the company denied compensation because it was revealed in an investigation that he was drunk at the time of the accident. The workers of the company went on to strike demanding compensation for the family of the deceased. The chairman of the management board has asked for your recommendation. आप कौन है? HR. What recommendation would you provide to the management? Discuss the merits and demerits of each of your recommendation. Yes, हो गया टाइम, क्योंकि ये इट्स वेरी स्मॉल, नो पढ़ने में टाइम तो जाएगा नहीं. जस्ट इमेजिन दिस साइज ऑफ दिस केस स्टडी और इवन 26th and what you might have seen in 2022. Okay, time is the only enemy. Anyway, क्या recommendation देंगे? Now here recommendation obviously is in the form of, or it's just other word used for option. Recommendation means option. ऑप्शन भी otherwise कैसे recommend करेंगे? Just tell me non-mutually exclusive recommendations that you thought. The recommendation cannot be plan of action. What do you recommend? क्या मतलब होता है इसका? It is closer to stand, option. डिटेल में क्या करेंगे वो एडमिनिस्ट्रेशन ही करेगा ना, कि एग्जैक्टली अभी किससे बात करनी है. जैसे कोई अगर आपको ये पूछे, या फिर इफ यू आर आस्किंग मी क्या करेंगे इस पे, तो यू आर एक्सपेक्टिंग मी कि मोटा मोटा बताओ क्या रिकमेंडेशन है. ये तो नहीं पूछेगा कि एग्जैक्टली क्या, फिर तो आप ही CEO बन जाओगे, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कि अभी मेरे हाथ में दे दो 2 दिन के लिए मैं इसको देख. ये नहीं. Recommendations are always in the context of in principle. Recommendations are always in the context of or in the nature of in principle. ये भी करो वो recommendation नहीं. Okay? And because second question क्या है देखो, तो merits and demerits of recommendation मतलब kind of closer to options than, ठीक है? Okay, anyway, आपने क्या कितने recommendations दिए हैं? Okay, can you read briefly what all this for? Okay, now, okay, you tell me, engage with them, ये recommendation है. जैसे if you come to me, ऐसा ऐसा हो गया, क्या करो? Engage करो थोड़ा. Engage means करूं क्या? हाँ, that can be clear cut recommendation. कंपेंसेट करना है नहीं करना है. Engage तो हम कर ही रहे हैं, but engage में क्या करूं? Obviously, then only it would be. See, not engaging है कोई choice है? You don't engage. ऐसे ये तो choice ही नहीं है. ये don't engage भी choice है. The recommendation cannot be like, okay, if they do this, give it, otherwise don't give it. ऐसा नहीं. Then it becomes algorithm. Broadly in this situation, what is your stand? देना चाहिए नहीं देना चाहिए, और या फिर तीसरा कुछ ऑप्शन है, यही रिकमेंडेशन हो. तो कैन यू रिकमेंड समबडी कि दे दो, देख लो? ये तो नहीं कर सकते ना. कि पॉइंट इज you cannot say कि you do this research and tell me. See, I'll tell you, this happens most of the time. If I ask you any social issue पे what is your opinion, तो लोग पता है क्या बोलते कि मेरा ओपिनियन ये है कि सबका ओपिनियन लिया जाए. वो तो हम ले रहे हैं, आप अपना बताओ. यू गेटिंग माई पॉइंट? लाइक जो सब बोलेंगे वो मैं करूंगा, ये कोई ओपिनियन नहीं है.
सब बोलेंगे, लेकिन सब बोलेंगे कब? सब मीन्स व्हेनेवर यू से कि जब सब बोलेंगे, वो होता है ना, जैसे कि मान के चलो यू पीपल आर डिस्कसिंग कि गदर को जाना है या OMG2 को जाना है, अभी नहीं, 15 सितंबर के बाद, मतलब जो भी 25 सितंबर के बाद, तो हम क्या बोलते हैं? सबको पूछ लो। सबको ही तो पूछ रहे, उसमें से आप पहले हो, बताओ। तो लाइक दैट योर रिकमेंडेशन शुड बी योर रिकमेंडेशन, बिकॉज यू कैनॉट से कि आप जो सही लगे वो कर लो, ये देख लो थोड़ा सा, वो ये नहीं। रिकमेंडेशन मीन आई रिकमेंड लॉजिक दिस दिस दिस, आई रिकमेंड लॉजिक दिस दिस, आई रिकमेंड लॉजिक दिस। रिकमेंडेशन एक ही जाएगा अल्टीमेटली। यू कैनॉट पुट कि ये 3 ऑप्शन है आपके पास, देख लो, फिर वो तो ऑप्शन उनको भी पता है ना? ओके, तो what recommendations would you provide to the management? So first is compensate the family. Okay, then second recommendation, matlab possible, I mean second as in either this recommendation or that recommendation. There is a set of recommendations. Now within, by the way, within one principle or within one recommendation, broad recommendation, that is yes, compensate them, there will be actions that also you can recommend within that recommendation, but broadly one recommendation. Second, don't compensate, वो भी एक ऑप्शन है. ओके, ठीक है, देन oh that is correct, yes. तो है, what are the merits and demerits of each of the recommendations? ओके, रिकमेंडेशन क्यों, सॉरी, कंपेंसेशन क्यों देना चाहिए? वो तो उसको ऐसे ही मिल जाएगा. कंपेंसेशन इज डिफरेंट, ग्रेजुटी, PF, वो तो मिल ही जाएगा उसको. वो हो गया, वो ड्रंक था. ओके, ठीक है. सी, पॉइंट इज बिकॉज इट वाज रिवील्ड इन द इन्वेस्टिगेशन दैट he was drunk at the time of accident. Okay, this additional feature can be like, though he was drunk, but was the accident inevitable even if he was not drunk? That's what you're saying. In that case, company should bear the thing. Okay, very good. This point should be, it's a different, because they are not given that information. If they would have given that, and because he was drunk, was, yes, वो तो recommendation करना ही है. See, your recommendation includes what all aspects? Number 1, with respect to family. Number 2, with respect to protesting workers. Number 3, with respect to safety measure. I mean company's overall thing, long term. All the 3 fronts you have to give recommendation to. Okay, yes. So okay, मोटा मोटा what would you do? आप मतलब आप अभी आपके पास मैं ही आ जाऊंगा कि बताओ यार क्या करना है. आप पब्लिक वोट, हाँ, तो वाई हवन?
तो वो हवन करोगे अगर वो मुस्लिम है तो। No, your point is okay. See, your point is okay. It's a innovative thing, but then don't say havan then. Okay. बट मॉर्निंग में फिर ये सब नहीं कर सके ना, वो बोले कि भाई मरा है उसको छोड़ के आप वो बता रहे हो कि दारू मत पियो, वो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. सी योर स्पेसिफिक, यू माइट डू इट एक्चुअली ऑल्सो, यू माइट डू इट, बट यहाँ पे वो जैसे मैंने बोला ना कि ऑब्वियसली यू हैव टू थिंक व्हाट ऑल प्रैक्टिकली आई विल डू. Yes, so but you have to make it presentable for this, so you have to make it in such a way that after this you can have sensitization program. Okay, you cannot say that I will emotionally manipulate them and then inject things in them. वो practically वो इतना लिख नहीं पाएंगे इस पे, you will not be able to write it इतना सोच के, otherwise it will, you may write, while writing you may slip into something else and something else will be read by the evaluator. इतना risky हो जाएगा मामला. वो हवन ववन तो बिल्कुल नहीं, मतलब इस पॉइंट इज वेरी करेक्ट. चेक करने वाला अगर दूसरे रिलीजन का तो फिर गयो, विच इज रिस्की. नो व्हाई? Then you have to write assuming the dead person to be from the same. And by the way, some other members that you are going to teach will not be feeling any special in that religious setting because that is not their religion. So why are you assuming that all the employees to whom you are going to give the teaching are from the same religion? They will not feel anything. Havan and all is perhaps they would not like also. ये सब धुआ हुआ लगता है मुझे. हो सकता है ना, because you never know. Why would they also respect or have the same nostalgia or other things? तो वो थोड़ा risky हो जाएगा. Don't do that. See, point is in that case, how can you speak about this? See, if you think practically, it's difficult. People may not absorb it. You are thinking they will absorb it more. No, you never know. It may backfire. Risk है. तो ज्यादा इट मे गिव पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑल्सो, बट रिस्क इतनी ज्यादा है, इसमें ज्यादा रिस्क हो जाएगी फिर पेपर के लिए. तो बेटर यू कैन डू वन थिंग, जैसे आई सेड, विद इन यू कैन डू कीपिंग द impact of this accident on the minds of the worker. As early as possible, the safety sensitization program would be arranged, keeping in the mind the impact of this accident on the minds of the worker. ये कर सकते हैं to understand their emotion, that now everybody wants to talk about accident and things. There you can bring in safety thing. Safety thing can be made regular. Safety drills can be done. Drill is a very important and very generally practically also implementable. Fire drills and other drills. Regular drills होना चाहिए, ये भी कर सकते हैं. Point is, first you have to think about what all fronts your recommendation should be. One, with respect to family, that is compensation. Second, with respect to the protesting mob, I mean workers. Third, with respect to their training and future. Maybe there would be something in the form of system in place. जैसे ट्रेनिंग एक चीज हो गई, बट सिस्टम इन प्लेस के लिए क्या कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, all the crucial areas would be fitted with CCTVs. Alcohol detectors, very good. No, but ये नहीं, ये recommendations हो गए तीसरे फ्रंट पे. मैंने जैसे बोला, within that, see, wouldn't you recommend this? I recommend कि कल से ये लगा दो, आगे ना हो. See, recommendations are three front, as I said. One with respect to family and the issues. Second with respect to the protesters. वो एक चीज हो गया. But long term recommendations भी तो दोगे. Anything else you want to say something? इसका cost simple. Anything that is additional means cost. Demerit तो है. See, you need to understand, when you think demerit, think क्या क्या negative आ सकता है, and for the same thing. Then when you want to think about merit, forget everything, think positive and then compare. Binary thinking. You want to say something? She want to say something? She has been stopped 3 times now. In the form of ये भी recommend कर सकते, either compensation, if not eligible and willing.
एक वर्ड हमेशा होता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज में भी होता है, पता है ना ये? हाँ नहीं, बट कंपेंसेशन भी दो रिकमेंडेशन हो गया ना, एक विदिंग कंपेंसेशन एज सेड यू कैन कंपेंसेट इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन द फॉर्म ऑफ जॉब टू, और नॉट बोथ, ये भी हो सकता है। रिकमेंडेशन तो 3-4 रिकमेंडेशन 10 भी दे सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। No, I did not said options. I said option like closer to optional option thing. You cannot recommend this and this both together. Like no. What recommendation would you provide? No. Tell me, what recommendation would you give? See, you need to understand one thing with respect to recommendation. Okay, the most important thing is what all areas you are going to give your brain into. What is the problem? Family, protesters, सिस्टम, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है तो तीनों रिकमेंडेशन नहीं दोगे। सी पॉइंट इज जितना ब्रॉड हो सके, एंड लॉन्ग टर्म में भी दो टाइप के हैं, एक प्रिवेंटिव है, प्रिवेंटिव है, डिटेक्टिव है, जो डिटेक्ट करने वाले हैं, कुछ प्रिवेंट करने वाले हैं, फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी है, वो लॉन्ग टर्म में भी सब आए, सो दैट एनकरेज इट, इंस्पायरिंग है और मेकिंग देम अवेयर, आईईसी है। तो नहीं डाल सकते ना, जैसे डोंट गिव एनीथिंग। सी यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, योर आपके रिकमेंडेशन किस चीज, व्हाई आर यू गिविंग रिकमेंडेशन, कीपिंग व्हाट थिंग इन माइंड यू आर गोइंग टू रिकमेंड, टेल मी। ऑर्गेनाइजेशन इन व्हाट, ऑर्गेनाइजेशन मीन्स व्हाट, रूल्स एंड ऑल, ठीक है, रूल्स तो क्या है, उसमें क्या रूल्स है, इज वायलेटिंग द रूल, ठीक है। सी आप रिकमेंडेशन करोगे मीन्स व्हाट कॉन्सिक्वेंसेस यू आर एनविसेजिंग व्हाइल फॉर्मेटिंग दी और व्हाइल डिसाइडिंग दी recommendations, what consequences you are expecting, what consequences you are expecting, क्या हो जाएगा जो रिकमेंडेशन दे रहे हैं। जैसे सेकंड एआरसी का रिकमेंडेशन, क्यों, कुछ नहीं, हम बैठे थे चाय पी रहे थे, हमने सोचा चलो रिकमेंड कर दे, और क्या होगा हमें नहीं पता क्या होगा इससे, नहीं, गवर्नेंस बेटर होना है, यू नो, रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ना है, इफिशिएंसी बढ़ना है, ई एस्पेक्ट इंक्रीज होना है, इथिकलिटी चैप्टर 4, इथिकलिटी इंप्रूव, तब जाके ये इमेज में रख के रिकमेंडेशन बनाए, राइट। कीपिंग द कॉन्सिक्वेंसेस मींस कीपिंग द पॉजिटिव रिजल्ट्स इन माइंड। आप यूपीएससी क्यों कर रहे हैं, पता नहीं क्यों कर रहा हूं, बस, नहीं, लिस्ट में नाम आने के लिए कर रहे हैं। तो व्हाट वुड यू रिकमेंड टू समवन, मैथ्स ले लो भाई, मेरा है, अच्छा जा रहा है, योर रिकमेंडेशन वुड बी, व्हाई, ऑन व्हाट बेसिस यू आर गिविंग दैट रिकमेंडेशन टू हिम, 300 के ज्यादा आने के लिए दोगे ना, अदरवाइज क्यों, आपके मान के चलो आपको पता है कि मैथ्स में 100 आने वाले हैं, तो उसको दोगे रिकमेंडेशन, खुद भी नहीं लोगे। तो रिकमेंडेशन इज ऑलवेज कीपिंग इन माइंड समथिंग, सम रिजल्ट, तो हियर रिजल्ट इन व्हाट फ्रंट्स, फैमिली फ्रंट। नाउ फैमिली एक इश्यू है, दूसरा इश्यू नहीं है क्या जो लॉन्ग टर्म में होने वाला है, कि ऐसा हुआ क्यों, कोई भी प्रॉब्लम से, ये मानता हूं मैं कि एचआर है, आपको वही रिकमेंडेशन, लेकिन जब भी रिकमेंडेशन देखो दे तो जो भी कर सकता है म्यूचुअली, ये दोनों एक दूसरे को इम्पैक्ट कर, ये तो नहीं कर सकते ना कि उसको कंपेंसेशन दो और कंपेंसेशन दो भी मत, ये रिकमेंडेशन नहीं होगा। तो रिकमेंड कंपेंसेशन दे सकते हैं या फिर किसी को जॉब पे लगा सकते हैं, दोनों ही कंपेंसेशन उनको, मतलब आई थिंक दो ही वॉज ड्रंक, फॉरगेट अबाउट इट, बिकॉज एनीवे ही वॉज पार्ट ऑफ द सिस्टम, it may not send the good message and it won't be a big amount to the company तो कंपनी के लिए बड़ी चीज नहीं होती, we have to treat them as a family members, even if some family member does something, हम केयर तो करेंगे, उस तरीके का आंसर दे सकते। प्रोटेस्टिंग मॉब तो वैसे ही फिर शांत हो जाएगा, और उनको और भी उनसे बात करके इमीडिएटली शांत करने के लिए ये बोल सकते हैं कि no need to do all this, we are planning of giving the recommendation compensation, बट ये सब चीज हुई कैसे, उसका भी रिकमेंडेशन दे।
नहीं तो आंसर इतना ही होगा फिर. I'm sure you, as I said, no, innovativeness, even if not asked, is always expected. Like for example, what do we extra write always? That how to remove the impact of demerits. वो पूछ तो नहीं रहे, अपनी तरफ से लिख रहे. To have a 360 degree perception. That ये बंदे ने पूरा सोच के, रियल में सोच के आंसर लिखा है. ऐसे नहीं कि बस आपने पूछा हमने लिख दिया, ऐसा नहीं है. We are writing answer because really something of that sort happens in front of me. I will be trying to take care all the 360 degree approach possibly, to the extent possible, obviously, right?